English. Part 3. Now we are going to discuss note making and summarizing. How to prepare notes and summary from a given passage. We are now going to discuss about it. For both notes and summary, only one passage is given. The notes carries 8 marks and the summary carries the notes carries 7 marks, while the summary carries 8 marks. After reading the original passage twice, at least twice, the most important points should be traced, discovered, found out. One should look for the most important ideas in the given passage. Both notes and summary carry a caption or a title or a heading each. उभय नोट्स एवं समरी हेडिंग बा टाइटल दर पड़ो. नोट्स शुड नॉट बी रिटन इन सेंटेंसेस. कौन सी परिप्रेक्षी मध्य सेंटेंस आकार रे नोट्स लिखा जाई परियो नाही. However, it should be written point-wise, serially, in outline form. It means first we have to write the main point and then these sub-points. One may write the original words in the passage in notes. Passage रे जो word थिबो परिवर्तन न करिकी जने चाहिले notes लिखि पारे. However, the summary should be written briefly. Means concisely, using as less number of words as possible, carrying all the important ideas in the passage, using one's own words, most important own words. So therefore it has been underlined. Using same words, phrases or expressions as those in the original passage is a taboo. That means it is strictly prohibited. It is strictly prohibited. There is
fixed word में in summary, online Pressy that requires one third words of the original passage. So Pressy, P-R-E-C-I-S, the pronunciation is Pressy, requires one third word of the original passage, but summary doesn't have any fixed length. So it is flexible. We have to write all the important points, notions or ideas in our own words, giving a heading in it. So while it should be brief, concise, should be as less as possible.
Page 114, activity 1. Page, open up page 114, activity 1. Activity 1. I read the passage given to us in activity 1. For notes and summary, we will write our notes and summary after reading it, knowing all the difficult meaning and all difficult words. First we have to write summary and then notes. We have to first write notes and then summary. Both notes and summary carry captions or headings. Mr. M.R. Patnaik, the press secretary of the Industries Minister, came across the following letter in the Times of India. Mr. Patnaik went through the letter and prepared notes, and using his notes, he prepared a summary for the minister. The original paragraph was written by Vandana Mishra in the Times of Talche, in the Times of India, one of the important English daily. I read it, and after reading it, we will prepare notes as it is given in the text, and then the summary. Sir, it is sad to note that the public sector industries in India are failure. There are several shortcomings which are contributed to the failure of these industries. Some of these shortcomings are as follows. First, they are run on government funds under the control of autonomous corporations which have their peculiar way of functioning on non-business like principles. In other words, it may be said that they are not run on a commercial basis. It is incorrect to believe that they are managed on non-commercial lines as they have shown some profits. If run on commercial lines, they can show still better results. Secondly, they are generally run by bureaucrats who do not possess adequate business and managerial skills. The result is that there is too much red tape regime that mars the efficiency of these undertakings. These undertakings can show much better results if their management is entrusted to professional managers. Thirdly, in many cases, it is found that these public sector undertakings are not working to their full capacity. Underutilization of capacity can never be considered a sound commercial practice, whatever the reasons. Lastly, these undertakings, being autonomous bodies, pay high salaries and allowances to their staff. This breeds inefficiency. I suggest that corrective measures by the government and industry should immediately be taken to remove these shortcomings.
These measures should be taken before things go out of control. Summary should be written only in one paragraph. So before writing notes, we have to first write the difficult words. Do we have any difficult words? Shortcomings. Shortcomings. Faults. दोष, त्रुटि, shortcomings. Autonomous, run by itself. Autonomous ओडिया स्वयं शासित निजे निजको चलैवा अन्य काहा द्वारा परिचालित न होई निजे निजको चलैवा ऑटोनॉमस. Peculiar, strange, आश्चर्यजनक, unusual. Rate appeasing, অযথা বিলম্ব, निष्पत्ति नबारे अयथा विलंब. मार, destroy, interested, given the responsibility, दायित्व देवा,
professional managers, those who have MBA degree, Master of Business Administration degree. Under utilization of capacity, under utilization of capacity, working below capacity, working below capacity, क्षमता ठाରୁ कम काम करवा, सालारी दरमा, अलाउंस भत्ता, ब्रीड है सृष्टि करवा, ब्रीड है क्रिएट, एसएसटी करता सब डिफिकल्ट सब लिखा है एसएसटी पढ़ मु तार अर्थ कही दूची तालचंद बंदना मिश्र लिखुंट टाइम्स ऑफ इंडिया रे जे भारतर पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहूँ पूरा विफल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री माने सरकार अधीन में जो सब कल कारखाना शिल्प रही यथा नालकोरे जो आलुमिनियम कंपनी अच्छी नेशनल आलुमिनियम कंपनी, राउरकेला जो हिंदुस्तान स्टील प्लांट अच्छी ये सब गुड़ाक हूँ पब्लिक अंडरटेकिंग सरकारी शिल्प संस्था से सब बर्तमान फेल्योर 1902 मसीह जिते वाजपेयी भारत प्राइम मिनिस्टर थिले गोटे दिन में से जदि आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट को 8,000 कोटी टंका दे नथांते दैनिक 2 कोटी टंका क्षति सहूला शिल्पटी बर्तमान संपूर्ण बुड़ी जाता। तेणु ये किमती निज क्षति निजे दायी तार कारण वंदना मिश्र लिखिं। प्रथम कारण है अनेक गुड़े दोष त्रुटि अच्छी सेवरल शॉर्टकमिंग्स। फर्स्ट दे आर रन गवर्नमेंट फंड्स। प्रथम असुविधा कौटी सरकार पैसा चलुची अंडर दि कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन को चलाउछन स्वयं शासन निर्देश दो कि नहीं एवं से अद्भुत भाव काम कर अर्थात लक्ष्य व्यवसाय को जना पड़ुनी। अन्य भाषा कहले से व्यवसाय को बाद दे निजस्व ढंग चलाउछन किछि पैसा से लाभ कर व्यवसायिक ढंग चला जाता ताले बहुत भल पैसा मिलता। द्वितीयतः ताकू जो चलाउछन सब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्राट होती ब्यूरोक्राट 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 ले सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट कौन ना आईएएस ऑफिसर। सिविल सर्वेंट अर्थ है आईएएस ऑफिसर। एक आईएएस अफसर मैंने चलाउछंती जो मानकर व्यवसाय चलने कौन ज्ञान नहीं। तेणु कौन होची ना द रिजल्ट इज दैट टू मच रेट एफिशिएंट मार्क द एफिशिएंसी ऑफ द यूनिट। तेणु जदि कौन गोटे यूनिट खराब है को जंत्रपाति खराब है से आईएएस अफसर पाखु परमिशन आसी मैंने कम लगे 6 मास लग जाऊँगी आवश्यक कम हो पारना निष्पत्ति द्वारा डेली हो। तेणु यही अंडरटेकिंग ये व्यवसाय प्रतिष्ठान भल लाभ देखेब जदि एमबीए मान दायित्व दिया। थार्डली इन मेनी केसेस इट इज फाउंड दैट
these public sector undertaking are not working to their full capacity. तृतीय दोष है वर्किंग बिलो कैपेसिटी अर्थात जी क्षमता जी कम करने कथा जेहेतु किसी मेसीन खराब रोचे कहीं चेक करने ना स्वयं संस्था जानी शुणी से कम कम कर कौन कर ना अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी इज नॉट साउंड कमर्शियल प्रॉब्लम जाते कारण होना कहीं यह सफिशिएंट नए सो यह जेकोसी कारण दर्शाना कहीं यह कम परिमाण में काम करने सुस्थ परंपरा नुहे लास्टली दीज अंडरटेकिंग्स बीइंग ऑटोनोमस बॉडीज पे हाई सैलरीज एंड अलाउंसेस टू देयर स्टाफ स्वयं शासित प्रति वर्ष जानी शुणी कर्मचारी मानक दरमा भत्ता बहुत दौरान ताद्वारा कर्मचारी मान दक्षता बढ़िया परिवर्ते कमी कमी चली तेना वंदना मिश्र सजेस्ट कर दोष त्रुटि को रिमूव करके दूरीभूत करके तुरंत किसी स्टेप निगुड़ कोहली को बहया पूर्व तुरंत यार प्रतिषेध व्यवस्था कर सो मेजर शुड बी टेकन नचेत ये संस्था संपूर्ण बुड़ी आम आग ना देवा साधारणतः ना से किंतु तुमको जो पैसेज दिज्व कि ना दिज्व ना तुमको ना देवा पड़ो जदिव ये ना तुमको ना देवा पड़ो ना फेल्यूर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फेल्यूर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ये ना तुमको दवा पड़ो ना से दब नहीं चला रीजन्स कौन में फेल्यूर होचे मेन पॉइंट हम जो कहला मेन पॉइंट सब पॉइंट मेन पॉइंट 1 2 3 लिखा जब सब पॉइंट सब पॉइंट ए बी सी आई सेकंड थर्ड ये लिखा जब मेन पॉइंट रहेगा रीजन्स फॉर फेल्यूर सब पॉइंट रन बाय ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन on non commercial basis B run by bureaucrats without any managerial skill and business expertise C work below capacity work below capacity D pay high
salary and allowances to the staff. Second main point, steps for improvement. Steps for improvement. Government industries to take immediate corrective measures. Governments industries to take immediate corrective steps. Government industries to take immediate corrective steps. Later notes जोटा कि मेन पॉइंट सब पॉइंट रे जला ए नोट्स कर सारा परे या आधार रे से जो समझ देछि तमे ताको पढिबो और पब्लिक सेक्टर industries are a failure for following reasons. They are controlled by autonomous bodies and are run on non-commercial basis. The autonomous bodies are managed by bureaucrats having little business expertise or skill. Besides, many of these industries work below capacity and pay high salary and cost the staff. Point allowance, the government industries should take immediate steps to remove these faults. ये जो दुईटी पैराग्राफ पढ़ी आम गोटे पैराग्राफ हम तमे सब पढ़ी सारा परे जो नाम देछि फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हेडिंग का से समान रखिबो एवं तापरे निज भाषा रे गोटे पैराग्राफ रे प्राय पाखापाखि 80 रु 100 वर्ड मध्य यार सब लिखिबो एवं परवर्ती क्लास रे हमें डिस्कशन करिवा किलिंग ट्रैक तमे किलिंग ट्रैक पैसेज पढ़िबो समस्त डिफिकल्ट वर्ड निज डिक्शनरी देखिबो जोड़ा बुझी न होउची हमें देखो डिस्कशन करिया सहित तार नोट्स और समरी विल डिस्कस तमे जो समरी एठी देछि फर्स्ट एक्टिविटी 1 रो अर्थात जो फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो समरी दे पढ़ी सारा परे नीचे को प्रश्न करिवो एवं निज खाता को लिखिबो थैंक यू।